Hello students, I hope you have seen the last 4 5 videos which I have forwarded you with practicals, and I hope that if you might have understood them, and if you are having a computer you might have practiced them as well. Now today is the today is the today we are going to finish our this chapter. That one is chapter number 1, list and images in HTML. From this chapter, one point is remaining, that one is image element. So today we are going to learn the image element. So what does image element do, or why image element is used in HTML? Image element in HTML is used for assigning an image to the web page or giving an image on the web page. For that purpose, image element is used in the HTML. Now, how image element is written in HTML? In HTML, image element is written with the help of img tag. How is image element represented in HTML? In the image element is represented in the form of img tag on the web page. After that, like we have seen attribute in our unordered and order list, the type attribute, the start attribute. I hope you have understood the meaning of why type attribute is used, why start attribute is used. Okay. In the same way, there are 5 different types of attribute used in image element. The first with the image tag. Okay. The first one is the source file. Why source file is used? In this source file we give the in this as source file is represented as src attribute in image tag, and this src attribute has the image name. क्या होता है src attribute में? image का नाम होता है. Likewise alternative text is there. अगर कोई इमेज आपकी डिस्प्ले नहीं हो रही है तो उसकी जगह पे क्या देना है ना आपको, उसकी जगह पे आपको alt for alternative text we use alt attribute in image tag. ALT एट्रीब्यूट में क्या दे सकते हो ना, आप इमेज को कोई नाम दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. ओके. Next type of attributes are width and height, for setting the height of the image, how much height we want of the image, how much width we want of the image. That's why we require this width and height attribute. Next type of attribute used in image element is a border attribute. Border attribute is used for giving border to the web page. Giving border to the image in a web page. If you want a border in a through the image, at that time which attribute is used? Border attribute is used. And the last type of attribute used in image element is the align element. Align means the alignment. Left alignment, right alignment, center alignment, top, bottom. I hope you remember that. Okay. So align attribute is used for aligning your image at the specific position on the web page. Okay. So these are the attributes that we are going to use with our image tag. Okay. We will see them practically. Now if we want to see program practically, where we have to go in our computer, we have to go on a notepad. कहाँ जाना होता है? On a notepad. Okay, so we will see it practically. So going with the image tag for writing any of the HTML program, what we do? First we write our HTML tag. पहले क्या लिखते हैं? HTML tag. After that which tag is used? Body tag. Body tag. और मुझे ना body tag देने से पहले क्या देना है? Title देना है. As we have given titles in our 4 type of list. ओके तो मुझे यहाँ पे टाइटल देना है. सो फॉर गिविंग टाइटल टू द एनी ऑफ द HTML प्रोग्राम विच टैग इज यूज? हेड टैग इज यूज. हमने लास्ट के प्रोग्राम्स में हेड टैग का यूज किया है. और हेड टैग कहाँ पे होता है? हेड टैग इज रिटर्न बिटवीन द HTML स्टार्टिंग टैग एंड द बॉडी स्टार्टिंग टैग. द हेड टैग इज रिटर्न बिटवीन these 2 tags. Okay, here I have placed my head tag. In this head tag, what I want to give? I want to give title. So for giving title, I have to use a title tag. कौन सा tag use करना होगा? Title tag. अभी ये मेरा कौन सा प्रोग्राम है? Now this program is of image. This program belongs to a image. So which heading I am giving here?
I am giving here heading as image element. Now, sorry, here I am giving title as image element. Now, my title is over. I have given the text for a title, in between title starting tag and in between title ending tag. Okay, so yeah, I close my title tag with forward slash. Now, my title is over. So, what I have to do? I have to close my head tag as well. मुझे head tag को भी बंद करना होगा. So here I am closing my head tag as well. भी मैंने बंद कर दिया. Now we have to go with the actual program. Inside this body tag, as I told you earlier, we use different tags. Okay, only the head tag is the one which is used in between HTML and body tag. But बाकी के जो tags होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? That we are going to display on a web page. जो white area होता है उसके ऊपर जो कुछ भी content हमें display करना होता है उसके related tags कहाँ होते हैं? Inside a body starting tag and body ending tag. Okay, so here I am giving body starting tag and body ending tag as well and the HTML ending tag as well. Okay, तो यहाँ पे मेरा image का tag आएगा. Okay, so here I am using my image tag. Yeah, I use my image tag. अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, इन लास्ट लेक्चर्स आई टोल्ड यू दैट योर एट्रीब्यूट्स आर ओनली एंड ओनली यूज इन स्टार्टिंग टैग्स. कहाँ पे यूज होते हैं? स्टार्ट टैग में यूज होते हैं. आपने मुझे एंड टैग में यूज करते हुए देखा क्या? तो एंड टैग मीन्स यू हैव एंडेड योर कोड रिलेटेड टू दैट स्टेटमेंट. आपने जैसे लिस्ट का प्रोग्राम किया तो आपका एंड हुआ. आपने एंडिंग टैग में अगर कुछ दोगे एंड के वक्त आप बोलोगे दैट आई हैव टू राइट फर्स्ट आंसर. चलेगा क्या एट द लास्ट मोमेंट? No, at the last moment it doesn't work. You have to go in a sequence. So the attributes are only and only used where? They are only and only used in the img starting tag, in the image starting tag. So here first attribute that I am going to use is the src attribute, which will have the name of the image, Okay, so here I have given src attribute. After giving the attribute name, what I have to give? I have to give equal to sign. After giving equal to sign, okay, in this I will specify the name of my image. In this I am going to specify the name of an image. Then how will I specify? I will tell you one shortcut for specifying the name of image. What you have to do now? Wherever your image is placed, in whichever the folder. Now here in video lectures, this one is the folder. Here I have my image called monitor image. Which image? Monitor image. So what you have to do now? Here first you have to check the properties of the image, that which type of image it is. Here you can see it is the PNG image, PNG type of image. Likewise in our computer language now, there are many types of image. Like there are many types of image. Like first one is the JPEG or .jpeg, that is the extension. Like we use a .html extension for saving the HTML program. Same way every image have a dot extension specified. So a three type of extension for the image. First one is the .jpeg image, next one is the .png image, and the last one is the .gif image. Okay, now this image here, that .jpeg image, .jpeg image is a type of image which is little bit blurry image जो होती है ना, इन older phones जो बटन वाले phones होते थे उससे जब फोटो क्लिक करते थे ना तो ब्लर इमेज आती थी. सो those mobile phones were having the capacity to store the lower volume of image. मतलब कम डेटा रेट के इमेज क्या होते थे, पुराने वाले जो बटन के मोबाइल थे ना उसके अंदर से होते थे. तो उस टाइम उन इमेजेस का जो एक्सटेंशन था वो कौन सा था? .jpeg एक्सटेंशन था. Then next type of image is a .png image. .png image have a better clarity than a .jpeg image. .jpeg image कैसे होते हैं ना, थोड़े ब्लर फॉर्म में होते हैं. ब्लर अभी आपको पता होगा जहाँ आपको ऐसे फटी इमेज दिखती है ना, that type of image is known as that type of image we can say it is JPEG image, .jpeg image.
and the image whose quality is good, that type of image is in the form of .png, is in the form of .png. And the next, then the last extension that some of the image have is the .gif. .gif is the image which is मूवेबल लाइक अ वीडियो जैसे होता है ना, वैसे आपको कुछ कुछ इमेज दिखा मिल, जैसे व्हाट्सएप पे अभी फॉरवर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ दिवाली, एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, ओके। तो वो आपको जीआईएफ होता है, आपको बोला जाता है जस्ट टच इट एंड उसके अंदर फिर क्या होता है, विदाउट देयर इज नो साउंड, इट इज नॉट अ वीडियो, इट इज एक्चुअली अ इमेज, बट विच काइंड ऑफ इमेज, इट इज अ .gif इमेज। उसी टाइप की होती है .gif इमेज, जो मूव करती है, जो वीडियो जैसे प्ले होती है बट उसके अंदर साउंड नहीं होता, वो इमेज होती है, ओके। सो दीज आर द 3 extensions that are used for an image. .jpeg is a blur type of image, .png is a good quality of image, and .pgif is in the form of video, okay. So these are the 3 types of images. Now, so here we have the image of a monitor. Which image we have? Of a monitor. Now here it is shown that this type of image is the PNG image, but we want to confirm it that whether really it is a PNG type of image. What we have to do at that time, just right click over here and click on properties and check the type of a image, check the type of a image. So here in this bracket it is shown that which type of image it is .png image, .png image. So what we have to do now in program? Simple. What is the name of the image? Monitor image. See, there are some alphabets written capitally and some are written small. You have to use same type. So here I will give the name. I have to use capital alphabets because this one is in capital alphabets. Monitor image. So image is written in small alphabet. So here image. Now after this, which type of image this was? This image was of .png. See, I am not giving space, I am giving directly the extension of the image. The image was of the image is of the image is with .png extension, okay. After this, next what I have to do, I have to align my image. मुझे अभी alignment set करना है ना, लेफ्ट में जानी चाहिए, राइट में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए मेरी इमेज? So here I am setting my alignment. So I want my image to be aligned in the right position. In which position I want my image? I want my image to be positioned in the right direction. So here I am giving right as the value for alignment. Okay, so as I told you earlier, after equal to at the right side there are values, and here before equal to these are the attributes. Okay, we don't have to use comma, we can write just we have to give the space. After this, I want to give an alternative name to the image. Image को खुद का एक नाम है ना, monitor image, मुझे दूसरा कोई नेम दे के रखना है इमेज को, तो मुझे क्या देना है ना, यहाँ पे I want to use my alternative image. For that I am using alt attribute, and in this alt attribute, inside inverted comma, I am giving name to the image as a computer. यहाँ पे आपको extension देने की जरूरत नहीं है, you can simply give the name. So here I have given a computer. After this, next is I have to set the width and height of the image. कितनी साइज होनी चाहिए इमेज आपकी जो डिस्प्ले होने वाली है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? सो आई एम गिविंग हियर द हाइट. सो हियर आई विल गिव हाइट एज 150 and same I will give the width as inside after equal to here 1. Okay, I will just, so here I have given it how much attribute are specified here now, src, alg, alt, height. One attribute is remaining. Which one it is? It is the border attribute. Which attribute? Border. अभी इमेज दी है, इमेज को आपको border चाहिए, तो border देने के लिए भी आपको attribute लगेगा. So here I am using the border attribute, means the size of the border attribute as 5. Okay. Now here my program is over. Just I have to close my starting tab. Now, in the first lecture, I also told you that image tag is the tag which don't have a
क्लोजिंग टैग, जैसे आपने अभी ये इमेज टैग के अंदर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है क्या, जैसे ये टाइटल टैग के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है, ये बॉडी टैग के अंदर भी हम कोई तो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इस मतलब इसके अंदर कुछ तो भी हमने लिखा है, इसके थ्रू हम कुछ तो भी डिस्प्ले कर रहे हैं, इसलिए इनको हमने क्लोज किया है। बट इमेज टैग के अंदर हमने कोई टेक्स्ट लिखा है क्या, नहीं, हमने क्या लिखा है, सिर्फ एट्रीब्यूट्स यूज किए और उनके अंदर वैल्यू असाइन किए। सो there are no in computer language there are sorry in HTML there are two types of tags. First one is the container tag. Container tag मतलब जो उसको क्या होता है, ending tag भी होता है, it means which are in pair like body, HTML starting, HTML ending, head starting, head ending. So these are the container tag, and some tags in HTML are there which are empty tags, like मैंने आपको br tag बताया था break वाला, while showing the program of heading और while showing the program of paragraph, कोई तो भी एक प्रोग्राम में आपको br tag बोला था। So br, the tags like br, image, these type of tags don't have a ending tag, so these tags are known as the empty tags in HTML, and the tags which are in pair are called as a container tag। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने एंडिंग टैग दिया नहीं, यहाँ पे मैंने बस इमेज का स्टार्टिंग टैग, आफ्टर कंप्लीटिंग माय एट्रीब्यूट्स एंड गिविंग वैल्यूज टू दोस एट्रीब्यूट आई हैव क्लोज्ड माय टैग। नाउ here what is the next step that I have to do after completing my program, just click on a file, click on save or click on save as for wherever you want. I am going on a desktop wherever my folder is. You might remember that our folder is HTML folder. Here I am giving name to my program, that is image.html, and click on save. Now I have saved my program over here. Just what I have to do now, I have to go in my folder, okay, here, and I have to check it on a browser. So click on the program, right click and say open with, and click on Google Chrome. So here you can see that here the border is displayed, the alternative name for the image is displayed, but image is not here. Alternative name तो आ गया, border तो आ गई, पर image आई नहीं, क्यों नहीं आई? Question arises ना. The thing is, alternative name is given to the image. जब image display नहीं होगी ना आपकी, उस वक्त क्या आता है ना आपका, उस वक्त फॉर दैट पर्पस यहाँ पे क्या यूज किया, अल्टरनेटिव नेम। जब आपकी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी ना यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव नेम नहीं दिखेगा। बट इफ द इमेज इज नॉट डिस्प्लेड एट दैट मोमेंट ऑन द ब्राउजर, व्हाट यू कैन सी द अल्टरनेटिव नेम गिवन इन द इमेज टैग फॉर एन इमेज। ओके, तो अभी यहाँ पे इमेज लाना है, तो कैसे लाना है, हाउ वी हैव टू ब्रिंग इमेज ऑन दिस। सो व्हाट यू हैव टू डू, वी विल जस्ट मिनिमाइज दिस, and where our program is stored, our program in computer is stored on our program in a computer. I will minimize it and close this one. So our program in computer is stored in HTML folder. Okay, in this folder our this image program is stored. आपको सिंपली क्या करना है ना, आपका जो इमेज है वो कौन से फोल्डर में है, योर इमेज इज इन दिस वीडियो लेक्चर्स फोल्डर, ये वाले फोल्डर में है। यहाँ पे क्या करना है ना, आपको इमेज के ऊपर क्लिक करना है, यही नाम दिया है ना अपनी इमेज को, इसके ऊपर क्लिक करो और क्या करो, आई एम यूजिंग Ctrl+C टू कॉपी, और यू कैन राइट क्लिक एंड कॉपी द इमेज। मैंने इस इमेज को कॉपी किया। आफ्टर कॉपिंग द इमेज, आपने इमेज का प्रोग्राम कहाँ सेव किया है, where you saved the image program, you have saved the image program in this HTML folder। यहाँ पे सेव किया ना HTML फोल्डर में, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। तो जिस फोल्डर में आपका इमेज का प्रोग्राम सेव कर रहे हो, उसी फोल्डर में आपको क्या करना है, आपकी इमेज को पेस्ट करना है। पेस्ट किया, ओके, नाउ वी हैव टू सी द आउटपुट। जस्ट गो इन अ ब्राउजर, मेरा ब्राउजर ओपन है, आई एम क्लिकिंग F5 एंड सी हियर, मेरी इमेज डिस्प्ले हो गई। ओके, and alternative name is invisible because it is hidden at the back of the image. So here I hope that you have understood the program of an image. Do practice it at your home and inform me. And here we have finished our chapter number 1.
So with this chapter, I am forwarding you the notes of this chapter as well. So do write carefully in your notebook with understanding. Okay. So thank you.